So, hello friends, how are you all? Hope you are doing well. So, welcome everyone. Hope you can hear my voice properly, guys. And welcome. Today's session is a special session where we are going to talk about how to do and stock analysis step by step. I'm going to talk about various tools. I'm going to talk about how to go from here. Everything we are going to talk in detail. Believe me, this will be a wonderful session for every one of you. And so stay till the end and we'll talk about step by step process. And I hope my voice is clear to you. If my voice is clear, just type yes in the chat box. Yes. Okay. So guys, see, when we talk about you can say stock research, now lot many things you have to keep in mind, and normally there are two ways of understanding you can say the process. Now one is the top down approach, one is the bottom up approach. What is top down approach? Top down approach is nothing but where you understand about the macro analysis first, about which sectors are doing well, and in that you go and select a sector. That is easy way to do it, honestly speaking. No, if you are new and if you don't know how to go along with the things, no, I think that is a much better way to do it. And there is another approach called as a bottom up approach. Now what is a bottom up approach? Where you select the stock first and then you think about no which means select the stock, and then you go and research about the sector in which you have selected a stock. Okay, for example, top down approach for yani aapne dekha ki bhai, okay, defense is doing well. Okay, you go through the policies and all that, no, government policy, and you understand that. Then you go and see about which are the stocks available in the defense sector, and then you suppose you select BEL, HAL or BDL and all that, and similarly that way you go from the top to bottom. Similarly, when you talk about bottom to up approach, where you select a stock first, तो उसमें कैसे सिलेक्ट होता है? जैसे आप यू कैन यूज अ स्क्रीनर क्वेरी और यू कैन यूज तिजोरी फाइनेंस और एनीथिंग वे वेर यू सिलेक्ट अ specific stock which you like, and then you see the sector which involve it. Like for example, आपको Dixon technology अच्छा लग रहा है, so you understand about Dixon technology first, and then you think about the sector which it is in, then like electronics and all that. Okay, so that is a bottom up approach. So these are the mainly two approach which you can talk about. Now what we are going to talk about, we'll talk about first a top down approach today, and then in the next Friday session we'll take a bottom up approach. Top down approach में अलग way से analysis करना पड़ता है in selecting a stock. I'll try to cover in this session completely how to go step by step for the top down approach, and then we'll talk about next session a bottom up approach where we understand to how to select a stock through screener query or some other tools, and then we'll see about the sector. So is it okay with you? Yes, then just type okay in the chat box, guys. Just type okay in the chat box. So that is how we are going to go about it. And what I'll do, I'll try to make you understand that how to basically select the sector and everything. Okay, and कैसे analysis करना है और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, because there are more than 30 plus sectors. ओके 30 से क्या, मैं तो 40 बोलूंगा, 40 प्लस सेक्टर. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एनालाइज ईच एंड एवरी सेक्टर नो इन अ यू कैन से इजीली. तो आपको है ना, जैसे मैं आपको बोलूंगा ना, आई थिंक दैट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू. ओके, यस सीमा, जॉन, ओके, चेतन, हिमांशु. सो दिस इज हाउ विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. पहले हम लोग स्टॉक्स के सेक्टर के बारे में बात करते हैं. सो एज आई टोल्ड यू देयर आर 40 प्लस सेक्टर्स. अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतने सारे सेक्टर्स एनालिसिस कर पाओगे ना. इवन आई हैव अ रिसर्च टीम. ओके, दे आर आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वी सिट टुगेदर. देन आल्सो मैक्सिमम वी कैन एनालाइज 150 to 200 स्टॉक्स. उससे ज्यादा नहीं कर सकते. देयर आर 5000 स्टॉक्स. ओके, देयर आर मोर देन 30 प्लस सेक्टर्स. इतने सेक्टर तो हमने भी एनालाइज नहीं कर पाए, क्योंकि इफ यू वांट टू गो एंड डीप एंड अंडरस्टैंड, नो, यू हैव टू गिव टाइम, एंड उतना टाइम सबके पास होता नहीं है. करेक्ट. तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि यू हैव अ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, एंड इन दैट कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, नो, बेसिकली how to analyze as early as possible and as quickly as possible. Otherwise, no, आप घूमते रह जाओगे. By the way, guys, our next session is there on the Sunday. I given the link. If you want to join our workshop, do join the workshop on that day.
Okay, that is at 11 a.m. And by the way, guys, whoever is joined, guys, today, do like this video because it help us to reach as much as together. By the way, how you find the last Friday session AI tool? Was it helpful or not? If you think it was helpful, then just type H for helpful in the chat box, guys. H for helpful. मैंने काफी सारी चीजें बोली थी लास्ट टाइम. अगर आपने वो अटेंड नहीं किया है, गाइस, my sincere request to everyone, please go and check that video, because that some of the we are going to use AI today in order to analyze sector also. करेक्ट. तो इसलिए वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है. तो प्लीज प्लीज आप वो जाके जरूर देखना, बिकॉज it will help you to analyze sector or stocks in much more detail. Yes, yes, John, Sima, Chetan, thanks for the reply, Uday. So now let us talk about the sector first. अभी देखो क्या करना है आपको. एक सिंपल से फर्स्ट टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड टेलविंड एंड अ हेडविंड. Now, what is tailwind and what is a headwind? There is a terminology normally we use. Tailwind यानी क्या होता है कि something working for that sector very well, लाइक कोई गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई या कुछ भी हो गया, और समथिंग मैक्रो लेवल एनालिसिस इफ समवन इज डूइंग, then that is very much helpful for that sector. And because of that no, the sector is getting a push. Okay, like for example, when we talk about renewable sector, when you talk about defense sector, when you talk about railway sector, what is working for them? The working is that government is very very positive about the sectors. Okay. And basically because of that no, there is a big push coming in the sector. And you can see no, most of the companies in that sector is flourishing a lot. Okay, तो वो आपको सेक्टर यानी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या बोलते हैं, इवन द मैक्रो आउटलुक एट अ वर्ल्ड लेवल आल्सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. क्योंकि क्या होता है कि वॉट एवर हैपनिंग एट अ ग्लोबल लेवल विल रिफ्लेक्ट इन इंडिया. If you see whatever event happen, no, jo big not event, but you can say big innovation and all that stuff, normally it reflects in India in a lag, maybe after 2 years, 3 years, 5 years, like thing. Like for example, initially when Walmart started and all that started, बाद में यहाँ आके big bazaar, then अपना ये DMart and all that came into picture, correct? Like discount brokers. Okay, it was there from last 20 years in USA, but India, Zerodha, Upstock, Grow, they started coming up in last 7 to 8 years. Okay, so ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो, if you have something in your mind, no, please put it in the chat box. What you think that it is been taken from that Western country, even AI, Nvidia and all that. Such a big companies, artificial intelligence company, they've done extremely well at Western level. Now it will reflect in India. So these are all future trend. Normally when you invest in the future trend, it will be very very helpful for you, and it will, what you say, it will give you a good tailwind where the sector will do well and stocks along in that sector will do well. Now let us talk about headwind. Now what is a headwind? Something which is not working for that sector. Okay, something which is not working for that sector. For example, overall agar aap baat karo casino business, no, basically government is applying lot of taxes on that gaming and all that casino highest bracket, and you see that companies in that like Delta company is not doing well. Like another headwinds like fertilizer sector, that no, it is quite cyclical in nature. साइक्लिकल इन नेचर यानी क्या होता है कि बारिश अच्छी होती है तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम है. Even you talk about paper industry and all that, so there is lot of cycle in particular sectors. Even you can talk about sugar business, that is also very much dependent on the ethanol pricing and all that stuff. So all this stuff is actually impacting that sector. Now that is a headwind. We have to select a sector which is having much more tailwinds. Okay, जहां tailwind ज्यादा है और जहां scope बढ़ने के ज्यादा है, वैसे अगर आप सेक्टर सिलेक्ट करते हो, या चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी मच मच मोर. ओके, तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लाइक एवरग्रीन बिजनेस की हम लोग बात करें, लाइक एफएमसीजी एवरग्रीन होता है ना. कोई भी इकोनॉमी अप है तो वहां हमेशा रहेगा डिमांड, इसलिए उसका पी हमेशा ज्यादा रहता है. व्हेन वी टॉक अबाउट बैंकिंग, भाई बैंकिंग तो चाहिए ना, इकोनॉमी बढ़ेगी तो यार बैंकिंग के बिना थोड़ी इकोनॉमी बढ़ने वाली है. बैंकिंग हो गया, आईटी हो गया, आईटी, यू नीड आईटी.
Okay, so these are some of the, I'm just given few names where your chances of success is much more if you are dealing with this type of sectors. Okay, and if you see, all this sector must have given you at least 4 to 5 multi-bagger stocks in last 20-30 years. ओके, और वो चीज आपको हमेशा देखनी है कि क्या ये सेक्टर आपको बेसिकली नो फ्रीक्वेंटली मल्टी बैगर स्टॉक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं दे रहा है दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन दैट सेक्टर, दैट्स व्हाई स्टॉक्स इन दैट सेक्टर इज आर नॉट परफॉर्मिंग. Okay, so that also one of the criteria you can keep in. Guys, hope you are writing down all these points. So these are all very valuable points which you can keep in mind, no, when you are analyzing any sector and all that. Okay, तो आप देखोगे कितने मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको पास में मिले हैं इन सेक्टर में, ज्यादा है तो और अच्छा है. देन द चांसेस दैट दिस सेक्टर विल परफॉर्म इन फ्यूचर आल्सो, दैट इज अ बिग पॉजिटिव पॉइंट. ओके, अगर सेक्टर में मल्टी लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर में बहुत कम, यानी एक दो होंगे शायद मल्टी, अदरवाइज नहीं है. ऑयल एंड गैस में भी नहीं है ज्यादा. व्हेन वी टॉक अबाउट पेपर इंडस्ट्री में नहीं है. तो ऐसे सब चीजें जब फ्रीक्वेंटली होती है दैट मीन्स समथिंग इज no, it's not working for that. Okay, so yes, currently Sima FMCG is not doing well. I am talking overall perspective. Now there is always a cycle, but overall this sector has given a great return. So this is how I am talking. I am not talking about the current scenario. Let us keep current scenario aside. Please don't get into this current scenario, क्योंकि मैं आपको I am trying to make you understand how to analyze the stock. Are you with me? Then just type WU with you in the chat box. Okay, क्योंकि वो सब अभी करंट सिनेरियो साइड में रखो, अभी मुझे वहां बात नहीं, वो करने बैठूंगा ना, देन अगेन आई विल गो इन सम अनदर लेवल. Okay, so let us not talk about that. So basically this is how do you have to keep checking it, how the sector is performing. Okay, now in that there are 30 or 40 plus sectors. You can select any 5 to 6 sectors or 7 sectors, no, which you think are doing good. Okay, लेकिन उसमें भी जैसे one of the question what you put it. Okay, now if you talk about no that FMCG is not doing well, as Seema is told, you also have to understand within this run, no, whether this sector is it at which level. Is the rally already done? अब वो क्या स्लाइडिंग वे में है, वो आपको देखना है. Okay, this is what you have to understand. Okay, yes अतुल, सीमा, जॉन. ओके, तो आपको क्या देखना है कि भाई जैसे आपको लगा कि डिफेंस सेक्टर तो बहुत अच्छा है, 3 साल से बहुत बढ़ रहा है, बट नाउ यू सी डिफेंस सेक्टर गॉन डाउन इन लास्ट 6 मंथ, renewables gone down in last 6 months, railway gone down in 6 months, PSU also. So at which level you are entering, that is also very important. It's not that a mega trend will always be on a 45-degree angle. No, there will be ups and down. Now it's not that the defense का mega trend खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है. But at what level it is, you have to understand whether, now suppose a defense stock which you were getting at 15 to 20 p, now if it is trading at 70-80 p, of course it's a overvaluation. So you have to understand within this cycle also where currently the scenario is. Okay, so इसलिए आपने देखा कि काफी सारे डिफरेंट स्टॉक लाइक कोचिंग शिपयार्ड एंड ऑल दैट, नो, garden shipyard and all that, they corrected by 40 to 50%. So understanding at what level we are, even though it is a mega trend, I am not saying this mega trend is over. This mega trend will be there for next 10 years, but in this mega trend there will be always be a cycle, up and down, up and down, and up and down. And that is what you have to understand here. सबसे बड़ा पैसा कब बनता है? सबसे बड़ा पैसा तब बनता है कि जब मेगा ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है एंड यू एंटर. If you enter at that time, believe me, you will make extraordinary return. Like no, most of the defense stock or even the broking businesses and no platform businesses like BSE, MCX, or so many broking like no businesses and all that, these guys are giving you almost 3 times, 4 times, 5 times returns if you are able to enter at the right time. Okay, अब ऐसा नहीं है कि आपने बीच में एंटर किया तो आप कमाओगे नहीं, आप कमाओगे, लेकिन योर रिटर्न विल नॉट बी सो सब्सटेंशियल व्हेन यू एंटर एट अ इनिशियल लेवल.
Okay, so that you always have to keep in mind that at which phase these sectors are there. करेक्ट एंड लाइक एफएमसीजी सेक्टर की हम लोग जब बात करते हैं नो बिकॉज द इन्फ्लेशन गोइंग अप देयर मार्जिन इज नॉट गोइंग अप. ओके, सेल्स इज नॉट देयर. तो जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा एफएमसीजी ऊपर नहीं आएगा. सो अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू एनालाइज एनी स्टॉक. सो इफ यू आस्क मी, अगर मुझे बोलते कि भाई 1.5 महीने पहले बोलते कि क्या मुझे डिफेंस में डालना चाहिए, तब मैं ना बोलता था. लेकिन अभी नाउ एज इट इज 40-50% डाउन, of course it's a good opportunity to get a normalized return, not like 100% return every year, but maybe 15-20% return आपको हर साल चाहिए. Then it has come to that level that now you can earn that type of return. So understanding at which phase the sector is lying is very very important. Just do not have to blindly invest. Yeah, we have to enter at a stage 2. Okay, तो blindly invest नहीं करना है अपने को. And as I told you, all these mega trend will have this type of cycle. अगर हम लोग बोले renewables, now most of the renewable stock gone down. उसका मतलब क्या रैली खत्म हो गई? नहीं, रिन्यूएबल की डिमांड रहने वाली है. नेक्स्ट 10 साल में या 15-20 साल में योर पावर स्टॉक नो विल गो थ्रू नो टुवर्ड्स रिन्यूएबल मच मोर. ओके, तो ये सब रहने वाला है, तो इसलिए आपको जानना ये काफी जरूरी है. नाउ यू मे से तपन हाउ आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट सेक्टर मच मोर, or you can say in details I don't know about it, then you can use artificial intelligence also in that. Okay, and what I'll do, I'll show some demo so that no आपके लिए वो थोड़ा better रहेगा. ठीक है, you want to see some demo and all that stuff, so that no you live, then just type D for demo in the chat box. And by the way guys, as I told you, I want you guys know to yeah, I want you guys to do like this video guys without fail. So more want at least 100 likes in this video. Okay, so that help us to increase our reach. And also I've given the link for our next masterclass. If you want to attend, you can attend. Now what I'll do, I'll give you some of the how you can analyze basically you can say in the chat GPT and all that. Okay, कैसे आप एनालाइज कर सकते हो. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्क्रीन शेयर किया है, नहीं किया अभी तक. ओके, 1 मिनट. परप्लेक्सिटी भी खोल लेता हूं मैं, जस्ट मिनट. ओके, यस यस यस, सुजात, सीमा, हिमांशु, कृष्णमूर्ति. तो देखो, होपफुली आपको अभी स्क्रीन दिखेगी. ठीक है, नाउ सपोज दिस इज चैट जीपीटी, सिंपल. ठीक है, नाउ अगर ये चैट जीपीटी है, okay, and no you want to ask about any question about any sector. Now I am not going to write everything, it will take all of time, but I'm just putting some question. Okay, so जैसे how is the for example you can say defense, या कौन सा लिखना है, चलो कोई एक सेक्टर का नाम दो. okay, जैसे capital goods sector operated in Indian space. Okay, then how important again, how important is the Indian market यानी how important is the, मैंने जैसे ऐसे capital goods in Indian open market. What is the history and its sector rate over the years? How is the performance against the GDP growth? How are the various vertical segment? How is the performance, and no, which segments vertical doing well? Which are the listed companies operating in this segment? No, ऐसे कुछ questions आप ऐसे लिख सकते हो for suppose for the capital goods, and then you enter. Okay, आपने ये कुछ questions लिखे, then the chat gpt will give you the complete understanding about the sector. Okay, see, the capital goods is the sector played a pivotal role in Indian industry. Okay, operation of capital goods sector in the Indian market, importance in Indian stock market context, history and growth rate over the years, कैसे इन्होंने grow किया है, performance against the GDP growth rate, vertical segments and its performance. क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ने इट्स द लार्जेस्ट सब सेक्टर. ओके, प्लांट इक्विपमेंट, अर्थ मूविंग मशीनरी सेकंड सेक्टर, मशीनरी टूल्स थर्ड सेक्टर. ओके, एंड लिस्टेड कंपनी, सो कौन से लिस्टेड कंपनी वो भी आ जाता है. इवन यू कैन यूज परप्लेक्सिटी फॉर द सेम वे, लाइक यू कैन प्रो कर सकते हो आप.
एंड नो जैसे मैंने यही क्वेश्चन यहाँ डाला आपका, ठीक है, no need to take a no pro plan. The basically you can the free version is okay with you. Okay, so आप देखो ये अभी एनालाइज करा है, then now it is telling you everything. See, overview of the capital goods sector in India. Okay, operation of capital goods sector. Okay, electric equipment, plant equipment, earth moving, okay, and all that. Importance of capital goods, history, performance against GDP, vertical segment, listed companies, कौन से L&T, Siemens, ABB. फिर वो क्या करता है, here you can get the other questions also. You can see what are the key drivers behind the growth of capital goods in India. तो आप वो क्लिक करोगे, then another one layer down it will go. You can see again you are getting an answer about capital goods. और थोड़ा deep में जा रहे हो आप, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है. देन अगेन अनदर, हाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ पीएलआई स्कीम ऑन द कैपिटल गुड सेक्टर, वो भी आपको पूरा डिटेल में बताएगा. तो इट इज लाइक नो, इट्स लाइक नो हाउ यू वांट टू गो फॉर दैट. ओके, एंड आपको देखो एक के बाद एक आपको और डिटेल में समझ रहे हो. आप जैसा क्वेश्चन पूछोगे आप वो सेक्टर के बारे में आप जान पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू गो इनटू डीप. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे to understand a sector through, you can take chat gpt or perplexity, कोई भी ले सकते हो. And I think this is the way you should go. You just have to write the question how the sector has performed over the years in context of Indian stock market. फिर what are the various segment, and फलाना ढींका जो भी पूछना है पूछो, एक एक करके आंसर देगा. Do you think this is the wonderful way? Then just type W for wonderful in the chat box. Just type W for wonderful. This is very, very important. ओके, एंड आप इस तरह से देख सकते हो. फिर आप क्या कीजिए, यू कैन गो अगेन इनटू द लाइक स्क्रीनर है, ठीक है. तो जैसे आप कौन सा बोलते हैं, एबीबी, एबीबी इंडिया है. ओके, नाउ यू कैन सी हियर एबीबी इंडिया, इट्स इन कैपिटल गुड्स. ओके, अब आप देखो यहाँ आपको पूरा कंपैरिजन मिल रहा है सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज. ओके, कि पूरा आपको यहाँ कौन से स्टॉक्स है उसके रिलेटेड वो दिख रहा है. अगर आप यहाँ क्लिक करोगे ना, 1 मिनट, आई जस्ट शो इट टू यू, 1 मिनट. तो अगर आप यहाँ क्लिक करोगे कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, जैसे वहां क्लिक करोगे आपको सभी कंपनीज का, कैपिटल गुड्स के सभी कंपनीज का यहाँ डिटेल मिल जाएगा. यू कैन सी दिस आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, सो सपोज यू क्लिक देयर, ठीक है. तो आप जैसे वो क्लिक करोगे, यू सी ऑल द कैपिटल गुड्स कंपनी मिलेगी. अभी आप बोलोगे तपन लेकिन ये सेक्टर परफॉर्म किया है कि नहीं किया, मुझे कैसे पता चलेगा. यू आर टेलिंग नो, यू हैव टू नो बेसिकली सिलेक्ट अ सेक्टर व्हिच इज डूइंग वेल. तो आप क्या कर सकते हो, हियर वन ऑफ द हैक यू कैन डू इट, नो बेसिकली आप यहाँ है ना, देयर इज अ 5 years परफॉर्मेंस. ओके, 5 years रिटर्न, 3 years रिटर्न, 1 year रिटर्न. ओके, वो आप सिलेक्ट करके आप देखो ये 5 years रिटर्न है. हियर इट इज अ 5 years रिटर्न. सीमेंस, एबीबी, सीजीपा, सुजलॉन, बेल, वाड़ी, हिटाची, जी, एंड यू सी 5 years रिटर्न, 39%, 42, 129, 101, 39, 68, जी, 87. Do you think all is about 40%? Do you think it's a good return? No, करेक्ट. 5 साल में हर एक कंपनी ने एवरेज 40% से रिटर्न अच्छा दिया है. what it shows, this sector is doing well. This sector is doing well, and overall ये 1 year, 3 year, 5 year रिटर्न यहाँ आपको दिख रहा है. करेक्ट. ये रिटर्न कौन सा है, दिस इज अ रिटर्न ऑफ स्टॉक रिटर्न. इससे आपको पता चल रहा है कि यस, दिस स्टॉक्स आर डूइंग क्वाइट वेल, एंड दिस इज व्हाट you have to understand, that अगर ये perform कर रहा है, that means this sector is doing well. And if you want to know about more about the reason, you can go and check into chat gpt के भाई आप ऐसा भी लिख सकते, why, और perplexity, why capital goods sector is performing well in 5 years, और वो आपको पूरा रीजन देंगे. In that way, you will able to understand a sector in a deeper level, and you can compare each and every competitor also with each other. Clear. And this is called a top down approach. Even you can use tijori finance also, like ABB India hai. Okay, so ABB India hai.
Now ABB India is there. Now here the complete detail of ABB India is there. Okay, now here there is an another, अब मुझे पता नहीं यहाँ दिया है कि नहीं दिया है, दिस इज इन कैपिटल गुड्स, लेकिन यहाँ नहीं दिया है, लेकिन ABB इंडिया में भी आप काफी सारी चीजें कंपेयर कर सकते हो. जैसे यहाँ जाओगे ना, so no, like annualized order inflow, भेल, ABB, CG Power, और यहाँ भी आप कंपनी ऐड कर सकते हो, Bharat Electronics and all that. No, basically this also you can understand. Here also there is an option of understanding of the sector. For example, if I take Bharti Airtel, okay, and you can see here there is an option called telecom. Okay, telecom as a sector. सो आप यहाँ क्लिक करोगे ना तो पूरा टेलीकॉम सेक्टर का आपको डेटा दिखेगा. ओके, कि कैसा कम बेसिकली हाउ द सेक्टर इज देयर. ओके, और आपको यहाँ नो आप पूरी कंपनीज का पूरा डिटेल्स में आप जो भी चाहिए वो सब ऐड कर सकते हो, एंड यू कैन कंपेयर द complete sector. Okay, like this is a stock price wise, again market share में कैसा रहा है देखो, भारती, वोडाफोन, रिलायंस. ओके, सो हाउ इज दैट. नाउ दिस इज ब्रॉडबैंड. ओके, मोबाइल सर्विसेज में कौन आगे है ये आपको पता चल रहा है यहाँ से. then in a sector when we talk about the number of mobile subscribers company wise, so company wise देखो number of subscribers किसके ज्यादा है, आरपू कितना है. ओके, सो दैट आरपू ऑल्सो यू विल कम टू नो. ओके, 1 मिनट. जैसे ये कौन सा है यहाँ, भारती एयरटेल. सो भारती एयरटेल, वोडाफोन एंड रिलायंस. ओके, सो आप ये ऐड करोगे तो आपको यहाँ से, ये पता नहीं क्यों आ नहीं रहा है, 1 मिनट. Yeah, so now you can see here all the threes are showing here. Okay, similar number of data subscriber, ये तीनों company का monthly data usage. See, this is all sector data. See why this is important to understand. Okay, now why it is important to understand, because ये सब देख के आपको पता चलेगा कि भाई this sector, in this sector also, which stocks are performing well over the years. Now I'm not saying that just because it is performing over the years well, it is going to perform another, you can say for next 5 years also in the same way. No, ऐसा नहीं होता है. But at least history जानने के लिए guys, no, before selecting any stock you have to compare with the peers comparison. अगर आप peers comparison नहीं करोगे then there is a problem. One is understanding of the sector and all that, कि sector क्या है, history कैसा trend रहा है and all that stuff. I think chat GPT or perplexity or all these AI tools are great where they will tell you point wise, no, how is the sector and everything. When you talk about the data, आपको check करना है कि भाई हर एक कंपनी एक दूसरे के सामने कैसे stand करती है. This is where you can use this one, screener and tijori finance, to understand till means no data ratio point of view and all that. It will be very, very helpful. So with me currently guys, hope you are getting lot of value. If you are getting value, then just type V for value in the chat box guys. Believe me, my team is also doing the same process. मैं भी ये प्रोसेस करता हूँ. मैं कुछ आपको अलग प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ. हम लोग जब स्टॉक रिकमेंडेशन करते हैं, हम लोग यही चीज करके देते हैं. Okay, when we recommend to our clients, and I think many of you are our clients. Okay, and so we do the same process. That is what I am giving it to you. So believe me, ये करते जाओ, you will get lot of clarity. Now you know you have your personal research analyst with you, and who is your personal research analyst? All these AI tools are acting as a personal assistant. Make use of it. This, when I was a research analyst, no, all this screener, AI, no, this tijori and all that was not there. एक डेटा प्लॉट करते थे हम लोग बैलेंस शीट PNL में से, 4 दिन लगते थे वो क्रिएट करने में. अभी वो स्क्रीनर जो मैंने आपको दिया, एक्सेल स्क्रीनर एंड ऑल दैट, ओके, विदिन सेकेंड्स इट इज क्रिएटिंग डेटा. विदिन सेकेंड्स हमें ये डेटा मिल रहा है जिसमें आपको कुछ काम नहीं करना. व्हाट इज योर जॉब? योर जॉब इज जस्ट टू एनालाइज द डेटा. योर होल, एंड दिस आर ऑल योर पर्सनल रिसर्च एनालिस्ट. ओके, मैं तो इनको खुद के एनालिस्ट ही मानता हूँ, क्योंकि जो कमांड करता हूँ वो मुझे देते हैं.
Correct or no? So make use of it. Make use. I know it will take some time, but believe me, guys, if you are able to do this, no one can stop you. No one can stop you. It's like a gold mine. It's about now how you take it forward. Okay. Yes. Yes. Vika, Sima, Charvan, Atul, Himanshu, Krishnamurti, John. Okay. चले तो यहाँ तक आप मेरे साथ हो. Okay, this was all about the sector. Now what you can do in this, my suggestion is that no, at least you can have it के भाई आप at least 5 से 6 सेक्टर सिलेक्ट करो. नाउ हियर आई एम टॉकिंग अगेन, आई एम रिपीटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप टू बॉटम अप्रोच. टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप्रोच हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक नाउ बिकॉज ऑलरेडी सेशन ये लंबा होने वाला है. वो करूंगा तो और 2-3 घंटे और निकल जाएंगे. सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट नाउ. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टॉप टू बॉटम. सो वंस यू अंडरस्टैंड द ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू के क्या चलेगा आगे जाके, गवर्नमेंट की पॉलिसी कहाँ है, अकॉर्डिंगली यू सिलेक्ट अ सेक्टर and then you have to go into deep into the basically at a company level. Now understand one thing. Now when we compare the companies like I showed you in the screener, okay, कि आपने कैपिटल गुड्स कंपनी को एक के साथ एक कंपेयर करे हो. अगेन फॉर ईच सेक्टर्स there are different ratios you have to analyze. Okay, कि कौन से रेशियोज आते हैं. ओके, जो इम्पोर्टेंट है कैपिटल गुड्स के लिए. जैसे कैपिटल गुड्स के लिए नो ईवी बाई बीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट नो, बिकॉज इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज, इवन डेट टू इक्विटी इन ऑल दैट. नाउ आप बोलोगे तपन ये सब कहाँ मिलेगा. आप आप एआई का यूज कर सकते हो. इफ यू पुट लाइक नो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स टू सी फॉर कैपिटल गुड्स, it will give you want to see. Okay, let me show it to you. Nahi to aap, I think many of you are our members also in our courses. No, we have already given that. You can go and check in that ratio analysis module. But just to show you, like no, like this is like chat GPT. Okay, so if you write what are the important ratios for analyzing capital goods stock. ओके, तो ये आपने लिख लिया, ठीक है, और आपने एंटर कर दिया. ओके, तो आप देखिए, आप ये फटाफट आपको देखो व्हाट आर द सम ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, व्हाट आर द कीप इन माइंड. लाइक मैंने बोला था, जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन, आरओई, आरओसी, ओके, एफिशिएंसी रेशियो इट इज गिविंग, व्हाट आर द एफिशिएंसी रेशियोज यू कैन कीप इन माइंड. लिक्विडिटी रेशियोज कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता रहा है. ओके, अब आप बोलोगे यार तपन ये तो बहुत सारे रेशियोज है यार, इतने सारे तो मुझे नहीं चाहिए. तो आप बोलोगे नहीं, गिव मी टॉप मे बी 4 ratios to check in कैपिटल गुड्स सेक्टर, और आपने डाल दिया. तो अभी वो 4 ही आपको देगा कि भाई ये 4 देखो. ओके, तो जैसे इसने बोला है कि आरओसी, और आरओसी का आपको फॉर्मूला भी दिया है, ऑर्डर बुक टू सेल्स रेशियो, ओके, डेट टू इक्विटी रेशियो, ओके, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन. अब ये देखो, ये चैट जीपीटी दे रहा है. अब दूसरे में देखोगे तो कोई दूसरा देगा. ओके, जैसे हम लोग यही क्वेश्चन डालते हैं यहाँ. ओके, तो वो डिपेंड्स, आपको जैसे करना है. ऐसे लिख लेते हैं टॉप 4 रेशियोज, ये परप्लेक्सिटी में देखते हैं. ओके, तो ये कुछ और देगा, बट एट द एंड ऑफ दैट देखो, ये आरओई, आरओसी, डेट टू इक्विटी, ईपीएस ग्रोथ, ये डिफरेंट. लेकिन यहां से भी आपको एटलीस्ट क्यू मिल जाएगा कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखने हैं, अगर इफ यू डोंट नो एनीथिंग, एंड दैट रेशियोज यू कैन चेक हियर. नाउ हियर भी क्या होता है कि अगर आप यहाँ देखोगे इन स्क्रीनर, if you see like 1 minute, I'll just put again ABB India. Okay, and here also अगर आपको जो important ratios देखने हैं, suppose it is not available here. Okay, now if you see here, there is an edit column here, edit column. Okay, ये edit column दिख रहा है आपको यहाँ. Okay, so you click that, and if you see here, there are lot many ratios available. Okay, तो आपको जो ratios चाहिए ना, that you can click here and you can bring it here.
Okay, like these are the main ratios I have taken. Zoiding again, sector to sector ratios may differ. Okay, and this is how no you have to check it up. Like quarterly P&L, बैलेंस शीट में भी आपको कौन से रेशियोज चाहिए, कैश फ्लो. सो यहाँ से आपको रेशियोज मिल जाएंगे एंड यू कैन लाइक आपको इफ यू वांट दैट ओके आई वांट टू अंडरस्टैंड प्रॉफिट ग्रोथ इन 5 years. ओके, तो यहाँ देखो ये आ गया आपका. आई हैव जस्ट क्लिक दैट एंड यू कैन सी अ प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 5 years यहाँ आ गया. And then I save the columns. Okay, and if you go at the end, you see here it is. Okay, profit growth for the 5 years. Got it? So what I'm trying to convey is that now all this thing is very easy. First of all, you have to understand what are the important parameters to check when we talk about the capital goods sector. तो आपको पता चला ये 4 to 5 ratios. Try to bring it into screener.in and कंपेयर विथ ईचर. तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये चीज है. जैसे फॉर एग्जांपल लाइक हमने देखा कि भाई आरओसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो यू सी आरओसी नाउ फॉर सीमेंट्स इट इज 25, एबीबी इज ऑन हायर साइड 30, सीजी पावर 46, सुजलॉन 24. ओके, भेल का बहुत कम है 3 है. ओके, अनदर वन वाज ऑफ कोर्स पी रेशियो तो ऑफ कोर्स काफी हाई है. सो पी रेशियोज भी देखिए 64, लेकिन ये सब हाई है इसमें. ओके, similarly you can say debt to equity. So you can see everything is in control. Only भेल का 0.38 है, otherwise everything is in control. So this is how no you can compare and go on for many of the sectors when you compare with each other. Just a minute guys. Okay, so guys, I am not talking about currently stock specific. I'll concentrate on, I'm getting a lot of question about stock specific. Let me make you understand all this because this is very very important. Okay, if at the end I'll try to take your questions. Now this is what you will able to understand your ratios. Ratios clear, then just type R4 ratios in the chat box guys. कैसे आपको चेक करना है, hope you are able to understand the history and all that. Okay, just type R4 ratios in the chat box. Another way is that yeah, quarterly results and all that, but quarterly results and P&L उसका जो डिटेल्स है ना, ट्राई टू ब्रिंग इट ऑन इन रेशियोज ऑल्सो ओनली. ओके, तो रेशियो से आपको पता चलेगा कि कैसे, जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन से लेके 5 years का ग्रोथ क्या था, वो सब 3 years का ग्रोथ, वो सब आपको यहाँ पता चल जाएगा. Another important point you have to understand is that no about the management and all that, जो आपको यहाँ पता नहीं चलेगा. लेकिन चलो उससे पहले शेयर होल्डिंग देख लेते हैं. Okay, so shareholding यहाँ आपको if you go down there is an availability of shareholding pattern. Okay, shareholding like promoter का कितना है, FII, DII, public. So you can see here promoters is constant 75% till the end. Okay, quarter to quarter. तो वहां इतना बड़ा चेंज नहीं है. You can see FII का थोड़ा बढ़ रहा है, around 12% है. DII all the details is there and public. Now if you want to see कि इसमें भी who are the major stakeholder, you just have to click this promoter and you will come to know who are the major country. Like ABB Asia Brown Brewery Limited is having the maximum. Again FII में कौन कौन है, DIS में कौन कौन है, तो वो पता चलेगा. एंड पब्लिक में कौन कौन है ये भी आपको पता चलेगा. सो कहने का मतलब ये है कि नो through this also you have to understand now whether there is an FII or DII ka, you can say the stake has gone down or up. All this thing you are able to see through this. Okay, तो ये बहुत ही important metrics है to understand. Plus if you go down there is an annual report. Okay, यहाँ आपको annual report मिल जाता है. ठीक है, and no PPT. So what is this PPT? Now any quarterly results when they come out, no, they give their own presentation कि भाई कैसा रहा हमारा quarter, how was the position and all that. No, so you if I click this PPT, no, you can see here this is ABB India PPT.
पीपीटी, तो उसमें काफी डिटेल्स बताई जाती है ना कि हाउ वाज द परफॉर्मेंस। ये भी एक अच्छा वे है no to understand about the company, where the position is and know what the company status is, and उसमें काफी सारी चीजें आपको पता चले कि where the company is concentrating. Okay, if you know last session में in the AI session, last Saturday session में I have given you how to use AI, and in that I have given a tool called Notebook LM. In that notebook LM, you can combine 4 to 5 sources, and then you can have a analysis. How many remember? You remember or not? If yes, then just type y for yes. अगर आपने वो नहीं देखा है, प्लीज जाके देख लो. I have spoken in detail about I think 4 tools: Chat GPT, Perplexity, Notebook LM, and TurboScribe. वो आपको पता होना चाहिए. ओके, तो वो अगर आपको पता है ना, देन यू कैन कंपेयर विथ ईच अदर एंड यू कैन गेट द डेटा. लाइक आपको नोटबुक एलएम से फायदा ये है ना दैट यू अपलोड ऑल योर डेटा इंक्लूडिंग नो रिसर्च रिपोर्ट्स प्लस एनुअल रिपोर्ट एंड नो all these ppt, then you can ask any question, it will extract data from that and give you the result. We also use this a lot. क्योंकि it's very difficult to go, and now AI is making that easier. तो यहाँ से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी द हाउ द EBBS परफॉर्म in last quarter and what are the things. Okay, so keep this in this also, no, it will be a good way to understand about the company. Correct. So इन शॉर्ट, अब बात होती है मैनेजमेंट की. अब मैनेजमेंट आपको कहाँ से पता चलेगा? मैनेजमेंट नॉर्मली कॉन्फ्रेंस कॉल से पता चलता है. जैसे ये अगस्त का कॉन्फ्रेंस कॉल है ना, ट्रांसक्रिप्ट एंड ऑल दैट, व्हाट द मैनेजमेंट इज थिंकिंग अबाउट. ओके, सो व्हेन यू क्लिक दिस, नो, कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट विल गो. ओके, एंड अच्छा यहाँ पे नहीं है. ओके, 1 मिनट. नहीं तो आपको वेबसाइट में जाके देखना पड़ेगा. ठीक है. एंड अदरवाइज नो थ्रू नो टेलीविजन में भी काफी सारी चीजें. देखो ये एक ट्रांसक्रिप्ट है, पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल है. Okay, what is the no this conference call is nothing, no, when the management is giving the view of the current quarter, and no, they are basically no answering the questions whatever asked by the no public assures public and the analyst. ओके, तो ये इससे भी काफी सारी चीजें पता है. अब आप बोलोगे तपन यार इतना सारा पढ़ना है. अगर ये नहीं पढ़ना है तो जैसे मैंने बोला, आप नोटबुक एलएम यूज कर सकते हो. You can combine the data and make it no much more easy to learn and everything, or at least analyze everything. See, now the tools are available. Now there is no excuse कि आप कर नहीं सकते हो. No, it's of course it's all about your time and understanding. But now all these things will help you to understand now how the current status of a company is. Okay, now when we talk about the future projection, कि भाई future projection कैसे करना है ना. फ्यूचर प्रोजेक्शन भी काफी हद तक आपके यू कैन से द कॉन्फ्रेंस कॉल से आएगा कि भाई क्या बोला जा रहा है कि कॉन्फ्रेंस कॉल में कि कैसा रहेगा आगे का स्ट्रक्चर, मींस द ग्रोथ. मैनेज विल टेल यू दैट ओके दिस इज द गाइडेंस एंड व्हाट दे थिंक अबाउट द सेक्टर and how the sector is going to grow from here, and what is their order book. Based on the order book, this is what they are expecting, and everything that will come to know through the guidance. And guidance ke base pe you can take a decision on how the things will be. But overall the trend of a sector is very very important. Agar sector हिल रहा है, then better not to go to that company. The reason is simple: directly or indirectly it is going to impact that company. तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है. लेकिन इफ यू आर हैविंग अ गुड सेक्टर इन योर हैंड, आई थिंक योर चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी मच मच मोर. So and as I told you, future projection all that, no, you have to do lot of forecasting. I know वो शायद सब लोग ना कर पाए. We do it, but it's our job. When we give recommendation, it's our job to do all that stuff. तो वो तो हमारी टीम कर रही है. But I understand वो सब आपको नहीं है. ऐसा होता ना, if you want guys, I'll have a separate session on know how to evaluate a future projection. You want to do that? चाहिए वो? Then just type F for future in the chat box. F for future in the chat box. Okay, तो that through एक बार लेंगे, and थोड़ा वो टेक्निकल होगा.
लेकिन अगर आपको चाहिए तो नो विल टॉक अबाउट दैट. नो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू सम रिपोर्ट्स आल्सो एंड थ्रू on Excel, know how we do it. So no, it will be a very good learning for that if you want to understand whether this company will do or not. These are the points you have to keep in mind when you are doing that future projections. Okay, see, all these are step by step process. This all there is no way कि मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई ये एक चीज कर लो लाइफ जिंगल वाला है, ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें. मल्टीपल फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, मल्टीपल वे ऑफ लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, एंड ये सब एक साथ कंबाइन होगा ना, तब जाके आपको एक अच्छा स्टॉक मिलता है. Now this is what I've spoken about the top. Yeah, just for understanding. Of course, no, not everybody will able to do it, but yes, you should know. At least you should know the process. ओके, कोई आपको ऐसे बोल दिया है कि यार ये स्टॉक ले ले, बहुत अच्छा है, यहाँ से डबल ट्रिपल ले, आपने कभी पूछा क्यों होगा? ऐसा तो क्या है इसमें कि वो भागेगा? ऐसा क्या फ्यूचर में दिख रहा है आपको? आधे आधे क्या 99% को पता नहीं होगा कि वो क्यों भागेगा. Just because they heard from someone else, they are telling it to you. Okay, but they don't know the logic behind why. वो लोग ऐसे बोलेंगे नो नो नो, लाइक फॉर एग्जांपल नो, जैसे सुजलोन सुजलोन बहुत भागेगा, यहाँ से 3 गुना होगा. क्यों होगा? जस्ट बिकॉज देयर इज अ नो मेगा ट्रेंड चल रहा है, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल, दैट्स इट विल गो. बस दैट विल बी द आंसर फॉर देम. ओके, और कुछ नहीं होगा. यू एग्री और नॉट? इफ यू एग्री जस्ट टाइप ए फॉर एग्री. ऐसा ही होता है ना, किसी भी पूछ लो, उसको ज्यादा अंदर पता ही नहीं होता कि क्यों भागेगा सुजलोन. भागे वोडाफोन, भागेगा क्यों? 8 रुपए में मिल रहा है यार, बहुत सस्ता है. अभी देखना वो अपने आप रिवाइव होने वाला है, और ये 20 रुपए जाएगा, 30 रुपए. क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, उसका डेट कितना है, आगे जाके क्या होने वाला है, वाई इट विल बी अ बाउंसिंग बैक, नो वन नोज. They just play on the no market sentiments. But if you want to earn money, come out from these market sentiments, because market sentiments is not going to help you to earn big wealth. These are just sentiment. It's not going to help you, and that's why awareness is very important. Ask valid question why it should go up. Okay, like for example, when we give recommendation, okay, I think many of you are our members, so we give you research reports. Why we give research report? Because this is the rationale why we are recommending this stock to you. हवा में बात नहीं. can when you see the research report, you also get a confidence. Okay, yeah, this is the reason no why it may go up from here. Correct or no? So a logical reasoning should be there, and when there is a reasoning, and then if it turns out to be true, it can create a massive wealth for you. So this is how you should keep in mind. Now this is a as I told, top down. Bottom up approach में क्या होता है? Yes, Mahesh, Sima, Atul, Krishnamurti, okay, Karunesh. नाउ बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है? बॉटम अप अप्रोच में ये होता है कि यू यूज स्क्रीनर और समथिंग लाइक दैट, और तिजोरी फाइनेंस और समथिंग लाइक दैट, टू सिलेक्ट अ स्टॉक फर्स्ट. You run a specific query, you select a stock first, and then you go and understand about the sector, okay, and the macro. तो उसमें स्टॉक, अब उसमें भी क्या होता है कि देयर आर मोर देन 5000 स्टॉक्स. उसमें भी आपको कुछ 5 से 10 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, ओके, या 3 या 4. तो यू हैव टू रन मल्टीपल क्वेरीज इन ऑर्डर टू गेट दैट. तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, we'll try to take it over. So no, it will give you a much better understanding. Any questions related to today's session, please put it. Guys, hope you got lot of value. Yes, you enjoyed or not, then just type E for enjoy. And guys, please click that like button without fail guys. And I don't want to stretch this session too much, otherwise over bombarding हो जाएगा आपके लिए. But anything for today's session, no, if you want to know anything, no, जो आपको पता है, तो please put it in chat box. Okay, and as I told you guys, if you want to know attend our session, I'm giving the link. Okay, guys, don't worry, this recording will be available on YouTube, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो वो कभी भी आप देख सकते हो. ओके, चलिए.
And by the way, guys, no, if you are still not part of our Telegram or Twitter channel, I'm giving the link. If you want, you can join it. A lot of valuable information we are giving. Okay. Yes, enjoyed. Okay. Yes, Ashok, Sima, Sitaraman, Krishnamurti, Atul. Okay, I'll take some of your questions, guys. Okay, mining sector is down due to government regulation to achieve GDP of 7%. Mining has to be. Uh, it may, yeah, लेकिन smeared IP smeared. See, the problem is no mining sector is much more controlled by the government. Government policies are always erratic. तो एक यानी यार देखो चांस ले सकते हो बट देयर इज नो क्लियर कट नो रोड मैप पे ये होने वाला है तो मैं जैसे मुझे जैसे कैसे पता है कि हाँ भाई डिफेंस का रोड मैप है ओके रिन्यूएबल का है या रेलवे का है अभी माइनिंग का अभी भी डाइसी है कैसे करने वाला है क्या करने वाला है और क्या रेगुलेशन ला रहे हैं दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी डाइसी एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू स्टे अवे वेयर देयर आर ऑलवेज एन इफ एंड बट्स that this may do well because of this or that may do well because of this. If you try to avoid as much as if and buts, I think it will be much better for you. So you have to keep that in mind. Okay. Yes, Krishnamurti, this is very important. Uh, John Peter, no, as I told you, you can use for the ratio, कौन से ratio है तो आप AI use कर सकते हो and also guys if you are no members of earlier silver and gold membership no there we talk more in detail about the various ratio. Uh, sir, where are all the names of the sector mentioned along with the listed companies? विकास मैंने जो आपको बताया ना just to show you again if I can show it to you again 1 minute hold for a second. जैसे ये एबीबी है ओके तो आप अगर यहाँ देखोगे सो यू कैन सी यू नो दैट कैपिटल गुड्स एंड ऑल दैट नो और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री here it is given and now when you click this okay and you can see here there is no complete companies with the electric equipments coming okay तो आप यहाँ से नो यू विल एबल टू नो विच आर द सेक्टर्स उसमें भी कौन सी नो कंपनीज है नो वहां से आपको पता चल सकता है सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड ठीक है चलिए yes 1 minute I am just going to the back any questions are left out or no Hmm. प्लीज नोटिफिकेशन फॉर फ्राइडे सेशन रेगुलरली ये फ्राइडे सेशन ऐसे में आ ही जाता है इफ यू आर देयर अवर यूट्यूब में आप हमारे सब्सक्राइब किए चैनल देन आई थिंक यू विल गेट अ नोटिफिकेशन थ्रू दैट नोटिफिकेशन यू कैन अटेंड मेदांता यू कैन होल्ड इट ओके चलिए शुड आई कंटिन्यू जियो फाइनेंस यस प्रमोद यू कैन होल्ड इट ओला इलेक्ट्रॉन नो इलेक्ट्रिक ऑल्सो यू कैन होल्ड इट नॉट अ प्रॉब्लम daily video means you become our no YouTube subscriber channel now I'll just give you the link just subscribe to this channel our channel and you will get notified no you can click that bell icon okay so once you click the bell icon no you will get the notification always ठीक है please tell us the ratio values for the best selection John as I told you for each sector there will be a different one तो ऐसा नहीं होता है कि भाई एक ही रेशियो सभी सेक्टर के लिए होगा सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन सेक्टर टू सेक्टर डिफर होता है ओके इंडस परिमल नो यू कैन होल्ड इट फॉर सम टाइम आई थिंक दैट इज सडनली नाउ रिकवरिंग ओके योर व्यूज अबाउट रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा है ओके एंड जीके बट अभी भी उतना नो क्रेज नहीं आया है वो सेक्टर के लिए सो आई थिंक यू शुड वेट फॉर सम टाइम बट ओवरऑल थिंग इज गुड एनटीपीसी ग्रीन टू मूव शेल आई बुक प्रॉफिट नाउ एनटीपीसी एनटीपीसी ग्रीन है ना आप थोड़ा होल्ड कीजिए अभी इतने जल्दी निकलने की कोई जरूरत नहीं है नो ओवरऑल ठीक है अभी 10-15% दिया है लेकिन आप जरा वेट कर लो नो नीड टू गेट आउट करंटली ओके
चलिए, what about the Adani Enterprise and Adani Port? Hold it for some time. Hold it. Both hold it. Okay. चलिए. That's all, guys. I think I have answered most of the questions. So thank you very much, guys, for joining, and I'll be seeing you next time. Okay, and I'll try to take bottom top approach next time, so it will be very, very helpful to you. Okay, and as I told you guys, if you're not attend our session, do attend it. Okay, chale guys, thank you very much. Then see you then. Bye bye. IRC, IRFC, IRCTC, BSC होल्ड करो, BSC होल्ड करो, IR दोनों होल्ड करो. IRFC, IRCTC अभी रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो, बाद में यू कैन थिंक ऑफ बाय. ओके, चले, सी यू देन, बाय बाय.